guys, what's up? It's me Khushbu and welcome back to my YouTube channel. So guys, in today's video I'm gonna show you how to do this beautiful look with minimal eye makeup and a bold lip. So if you want to know how I did this, keep on watching and do not forget to subscribe to my channel and give this video a big thumbs up. So yeah, let's go. So अभी मैंने अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है ना. I'm going to use a प्राइमर आपको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि अगर आपकी विजिबल पोर्स है तो वो विजिबल पोर्स अच्छे से फिल हो जाएंगे. एंड पोर्स जैसे ही फिल हो जाए सबका मेकअप एप्लीकेशन और भी ज़्यादा एफर्टलेस बन जाता है. Okay, for the note I'm using this Inside Cosmetics primer. This is their 3-in-1 primer. I always look up for affordable products. मेरे को अपने पैसे बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स पे खर्च करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको वही क्वालिटी वही सेम चीज़ अगर आपको अपने यूजुअल रेट वाले प्राइस पे मिल रहा है, प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है. सो आई थिंक दैट्स रियली नाइस. So I always like to go for affordable products. So next I'm using this Blue Heaven Fresh and Flawless Skin Tint. This is in the shade Honey Tan. So I'm just going to use the हाथ पे. So हम skin tint इसलिए यूज़ कर रहे हैं because we are going a little minimal, इसलिए हम skin tint यूज़ कर रहे हैं. Okay, so ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है मेरे स्किन टोन के लिए. मैं इसको एक ब्रश से ही ब्लेंड करूँगी. मैं इसलिए इसको ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज ये एक टिंट है. सो वी वांट द बेस्ट कवरेज, इसीलिए मैं इसको एक ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख सकते हैं कितने ईजीली कितने एफर्टलेसली ये ब्लेंड हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक स्किन लाइक फिनिश देता है आपके पूरे फेस को. विद स्किन टिंट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नेचुरल स्किन लाइक फिनिश है इसका. एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस स्किन टिंट. And this is definitely a go-to product if you're in a hurry. So for concealer I'm using the Miss Claire's full coverage makeup concealers. So guys, I am not going to be doing contouring. मैं आज contour नहीं करूँगी because we're keeping this look minimal. So contouring को हम skip करेंगे. मैं सोच रही हूँ मैं किस टॉपिक के बारे में बात करूँ. ऐसे चुप रह के कोई कुछ करे तो उतना ज़्यादा खैर मन नहीं लगता है ना. आपको कुछ बात करते रहे तो अच्छा लगता है. It was always a fun part to explore different makeup products and makeup techniques. हमेशा बहुत ज़्यादा fun part रहता था. अभी भी I feel really amazed and happy like when I get my hands on different makeup products. Especially tints and everything. Like I really like cream blushes, makeup tints, and I am really like very obsessed with makeup. Like I'm basically obsessed with makeup, but you know blushes मुझे बहुत ज़्यादा personally पसंद है. While photo focus palette, I don't know if it's their photo focus. No, it's their mega glow. It's not their photo focus. हमेशा मेरे घर से पीछे से आवाज़ें आती रहती है. It's still that same noisy thing going on in my house. I haven't really like stopped making videos because of this. Because of course I won't ever stop making videos because sound. For blush I'm using this Savannah Colors makeup palette. फिर ये शेड थोड़ा अच्छा लग सकता है तो मैं ये शेड चूज़ करती हूँ बिकॉज तो थोड़ा पिंकी भी लगना है ना. So I'm just going to take that shade. थोड़ा सा चॉकी पाउडरी है but it works.
वो ऑलवेज वो सनकिस्ड वाला लुक बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लग रहा है। ओके नाउ लेट्स कम टू द आई पार्ट। ओके सबसे पहले आई को मैं अच्छे से पाउडर से सेट कर लेती हूँ। सो फॉर आईज आई एम यूजिंग दिस पैलेट, दिस इज़ फ्रॉम NYB। एंड सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये वाला शेड है, इससे मैं पूरी अपनी क्रीज अच्छे से सेट कर लूँगी। आई लव दिस ब्रांड एंड दिस ऑरेंज शेड, एंड इन दोनों पिंक्स का भी हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ हम पिंक वाला शेड लेंगे, ये फर्स्ट वाला पिंक यूज़ कर रहे हैं, ये वाला तो ये पिंक शेड यूज़ कर। यहाँ पे हम ये वाला शेड मिडल में यूज़ करेंगे। बहुत छोटे छोटे से आईलाइनर रखेंगे। And yeah, that's it. Eyeliner हो चुका है। Now let's curl our lashes. Let's do our eyelashes now. So I'm using the Colossal Maybelline one mascara. This is like my favorite mascara. The waterproof one is really nice, to be honest. But for now it's time for highlighter, because highlighter is a must. So I'm using the Swiss Beauty Brick highlighter. I like the all shades. टाइम फॉर द लिप्स नाउ। सो लिप्स के लिए आपने पूरा मेकअप मिनिमल किया है, लिप्स को आप हैवी रखो अच्छे से। सो लिप्स आप यूजिंग ब्लैक लिप लाइनर। ओके दिस इज बेसिकली a नायका काजल, बट आई यूज इट एज माई लिप लाइनर मोस्ट ऑफ द टाइम। It's going to look scary in the first, but trust the process. Trust the process. Okay, let's use this lipsticks. This is the Stay Worky one. This is in the shade Bombshell 2. I love how the applicator is. I love applicators like this. Okay. Last part, I am going to take this very new pink lipstick. I'm going to put right here. Right there. I'm going to blend this up. This just adds a very beautiful shine, pop of color to your whole makeup. The minimal eyes and this bold lips just go very perfect together और बहुत ज़्यादा pretty. Yes guys, that was it with the video. I hope you like this, and if you liked this video, do not forget to watch my different videos of this different reviews, and let me know what kind of videos you want to see on my channel, and please comment down below, and thank you so much guys for watching.